एक तर्ज़ तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे. So you know you have to keep doing what you're doing and the universe will love a heart that just जो कि रुकता नहीं है बीच में. It's all about consistency and the universe actually recognizes that. Hello and thank you for joining us for another episode of Daftarkhwan fireside. I am Erum Ahmed and आज हम लोग की जो गेस्ट हैं उनकी मैं एक स्टूडेंट हूँ. तो हमारी आज जो गेस्ट हैं वो हैं फातिमा अमजद. शी इज़ माई मेंटोर. सारे क्लैपिंग करते हैं प्लीज़. तो आज हमारी जो गेस्ट हैं फातिमा अमजद, शी इज़ माई गुरु, शी इज़ माई मेंटोर. शी इज़ द वन हु ब्रॉट मी इनटू डांस प्रोफेशनली. और इनने बहुत सिखाया है मुझे, बहुत डांटा है मुझे. लेकिन शी इज़ ऑल्सो लाइक माई टीचर. शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई सिस्टर. शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर. जब भी मुझे किसी को अनॉय करना होता है मैं इनके पास चल जाती हूँ बिकॉज तो और अमजद हम सब ने मिलके एक हमारी कंपनी बनाई है बैयत, विच इज़ अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन कंपनी जिसके अंदर हम प्लेस वगैरह बनाते हैं. एंड अमजद लीड्स अस ऑल थ्रू इट. और आज हम अमजद से कुछ सवाल पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके बीच में ज़्यादा हंसे ना. नहीं, हम तो हंसेंगे भाई, डील विद इट. हमने तो नहीं कहा ये आपको. अच्छा अमजद, वेलकम टू फायरसाइड. ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे. Thank you so And much. thank you for taking out time for this. How are you? I'm very good. I'm going to act like I didn't answer this question first thing in the morning. We rarely ever ask each other whether how are we? How are you, Erum? चलो स्टेज पे आ जाओ. अच्छा जी. Okay, please ask me questions. पहला क्वेश्चन ये है, What sparked your passion for classical dance and theatre? So I was, my schools, honestly, to be credited for that, I went to Lahore Grammar School and we started learning at a very young age. We start at what, grade 1 में हम शुरू करते हैं and then grade 7 तक it's compulsory, it's part of the curriculum. And I had an incredible teacher, her name was Amy Auntie. And I used to be that child, you know, कि मुझे आखिरी रो में नहीं खड़ा करें, मुझे फ्रंट रो में खड़ा करें. Me? Yeah. अब मैं. That's you. And she used to say to me कि तुम ना ब्रेक में आ जाना. वो बड़ी लाइक शी वाज ओल्ड एंड शी वाज, उनके जॉइंट्स में बहुत दर्द होता था, तो कहती थी ब्रेक में आना, मेरी टांगें दबाओ, आप फ्रंट रो में खड़ा कर दो. But she was an incredible teacher. Then I had, I mean, I've been very lucky with my mentors, my teachers, and every time I'm talking about them, मेरा यही होता है कि every second line is about my teacher, Auntie Huma. She has been the greatest support, even till now. Every time I have a show, I go to her. I'm like, you know, listen to my script. And she gets annoyed also because she's not a very commercial theatre person. She makes theatre for the streets. तो मैं उनके पास फिर भी जाती हूँ. And she used to be, so she taught me theatre first. And she says this really interesting thing. She says that dancing is just theatre, but just one requires extra physical capability. So that's what I learned from. And then again, honestly, I was obsessed with Madhuri when I was young. I wanted to be her. I wanted to look like her. I wanted to dance like her. I wanted to talk like her. And I do, you know, obviously मैं copy तो करती हूँ उनको कभी-कभी. अभी भी किया है हमने पहले दिन बैठ के ऊपर. Yeah. So that's, I mean, classical dance as such, I mean, it was forced upon me when I was young, but out of all dance forms, I felt like my body was most apt for classical dancing. और किसी तरह की dancing के लिए मेरे से नहीं होता था ये सारा कुछ. I tried also when I was young and when in school, I was made to do a lot of that, but it just didn't sit well with me. I feel like, you know, naturally, Allah Mia probably made me for the dance style. वेरी नाइस. वैसे पता है आप भी अपनी एमी आंटी की तरह हम लोग से भी यही करवाती हैं. मैं ही कराऊंगी ये बात से. टीचर को पानी पिलाओगे तो सवाल मिलेगा. आई डू टेक इट. मैं अपने बहुत चीज़ें रिपीट करती हूँ अपनी टीचर्स वाली. आई रियलाइज कि जिस तरह आंटी हुमा वाज अमेजिंग विद ये लाइट डिज़ाइन एंड स्टेज डिज़ाइन, एंड शी यूज्ड टू कीप इट वेरी सिंपल, बट शी यूज्ड टू मेक इट वेरी प्रिटी विद द लाइट्स. And I feel like all of my light design, जितना मैं करती हूँ, जितनी टाइम होता है करने का, it is kind of inspired by her. And you know the things that she used to say, I repeat them unknowingly.
कि ओके योर वॉइस पेट से सांस लेना, ये सारी चीज़ें उनसे ही वापस आती हैं. वो हमने उनका एक अर्ज़ तमन्ना है सो हाँ, हम वो करते भी. रहेंगे भी, तो हमने यूज़ कर लिया उनका. जो हमारी जो कंपनी का की जो लेबल है, द लाइन दैट वी गो बाय, इट्स कॉल्ड एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे. एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस दैट माय टीचर टॉट मी. शी वाज लाइक, बिकॉज माय डैड इनिशियली वाज वेरी iffy about me being in school and dancing on stage. So this is, she sat me down one day and she said कि this is what these big writers are saying. It means कि उनके पास भी same तरीके के मसले आए होंगे in the process. So you have to keep doing what you're doing, and the universe will love a heart that just जो कि रुकता नहीं है बीच में. It's all about consistency, and the universe actually recognizes that, and then it makes ways for you. Second question. Yes. What has the journey been like you personally and professionally? Just as a woman, I think because I introduced this as I was introduced to dancing as my passion, and I started pursuing it. बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी, but I think what I do is actually connected me more to womanhood, and I enjoy every bit of it, every single thing that comes along. Dressing up for stage, just being a matriarch, because I've never seen that enough in my life. I want to, उससे मुझे जो आपको खुशी वो काम करके मिलती है ना, जो आपको पता हो आपके अपने लिए है. I think that also for my, and I keep telling people this, that what I do is not entirely professional. It can never be professional, and I wouldn't want it to be professional for my students also, because this is something that we think about, we talk about, and we feel for very, very personally. That's true. And I think for our personal growth, for my personal growth, it has been the one thing that has really driven me to take everything. And I think वो चार्ज मैं लेना कभी ना सीखती अगर मैं ये काम ना कर रही होती. मैं किसी दुनिया की और जॉब में फिट ही नहीं होती. How did you navigate stereotypes associated with dance in Pakistani society? देखो, I'm going to be very honest with you. I feel like I've been privileged enough to honestly not be stereotyped उस तरह, because they were okay. And हमारी audience जो है वो भी थोड़ी सी, उनका elitist mindset तो होता है बीच में. वो जिस जगह पे आप डांस कर रहे होते हैं उसको देख के अपना दिमाग बनाते हैं, ये हम जानते हैं. And I've been lucky with that. I understand not everybody is as lucky, and I understand ये चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं. And I wouldn't say कि initially, so the first time I was stereotyped was at my home, because my family would say कि अब्बा के जो दोस्त हैं और खाला हैं, गोगी आंटी, if you're watching this. So I remember this one time I was doing a show for the colony, and there was this auntie who came to watch, and I was wearing a lehenga choli and whatnot, and she took like really, it was a decent outfit, but she decided to take very close up shots of it, and she sent them to my dad. And that was the first time that I felt कि no matter, ये इस तरह के लोग होते हैं हमारी ऑडियंस में, और आप जो मर्जी कर लेंगे वो सोचेंगे आपके बारे में. So I remember with her, that was the first time I felt कि oh my god, am I doing something wrong? उससे पहले मुझे कभी भी नहीं ऐसा अंदाज़ा हुआ, because मैं जो भी करती थी एक क्लोज स्पेस में होता था, इतने लोगों को पता नहीं चलता था, वो आते थे, और वो ऐसे ही लोग आते थे देखने के लिए जो कि जिनका शायद उस तरह का कुछ होगा नहीं दिमाग में, माइंडसेट नहीं था. But making it public, yes, then I felt कि oh my god, now they're looking at it as dance. I used to look at it like okay, this is art, I'm making art, this is how I express creatively. But then I realized कि अच्छा, डांस एक अलग चीज़ है जिसको लोग अलग नज़र से देखते हैं. But so I found my way around it. I feel like when I'm making art for Pakistan, I make it for Pakistanis. हर जगह पे कुछ भी प्रेजेंट करने के आदाब होते हैं, एंड मुझे लगता है कि मैं उन आदाब का ख्याल रखती हूँ अपने तरीके से, जिस हद तक मैं कर सकती हूँ. Because at the end of the day, I want to make art for my people, for everybody in Lahore. And I focus on Lahore because I really do love my city. I don't make this up. I genuinely feel very, very strongly about it. And I want my people on the streets, जहाँ पे भी हों, कि वो देखें, वो ये ना कहें कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मिरासी भांड आ गए यहाँ पे, और ये तो ख़राब लड़की है.
और मैंने बिकॉज मैं बहुत सारा काम करती हूँ इन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी एंड आई रियलाइज ओवर टाइम दैट हर दफ़ा जब मैं जाती हूँ तो मेरे लिए आसानी होती है, अगली दफ़ा मुश्किल नहीं होती, बिकॉज दे आर गेटिंग यूज टू माई प्रेजेंस देयर ऑल्सो। दे लाइक अच्छा पागल आ जाती है तैयार होके और रोज़ दुल्हन के जोड़े पहन के आ जाती है, बट लेकिन वो कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने उनको एक्सपोज किया है टू आर्ट. Our people have not, they've been denied the opportunity to see good art. उनको तो वही लगेगा ना जो उनके दिमाग में उन्होंने बनाया हुआ है, जब तक वो सही चीज़ देखेंगे नहीं. फिर ठीक होते हैं, अब तो लोग प्रोटेक्ट करते हैं बिल्कुल सही से. एक अंकल हैं अंदरून में जिनकी छत हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिनके हम जाके बहुत शूट करते हैं. बड़े स्वीट अंकल हैं. उन्होंने एक दो दफ़ा ऊपर से देखा कि ये नीचे पागल गलियों में नाच रही तो उन्होंने मुझे बुला लिया एक दिन ऊपर. उन्होंने कहा मेरी फैमिली है ऊपर और मैंने कहा मैं ऊपर नहीं आ सकती. कोई 5 फ्लोर ऊपर था उनका घर, तो मैंने कहा मैं ऊपर नहीं आ सकती अंकल. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. उन्होंने ऊपर से छोटा सा टेबल मंगाया, गली में लगाया. उन्होंने प्लास्टिक की कुर्सियाँ मंगवाई. ऊपर से उन्होंने नाश्ता मंगाया अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, जितनी औरतें उनके घर में थी उन सबको बुलाया. ख़ुद वो बैठे साथ. तो उन्होंने फिर पूछा हमसे, एंड यू नो माई वीडियोग्राफर वाज विथ मी, एंड देन आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक अंकल मैं इससे डांस कर रही हूँ. मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मैं कॉलेज का प्रोजेक्ट करने आई हूँ. तो उन्होंने कहा बेटे आप इतनी छोटी हो, यहाँ पे कोई मसले ना हो जाए. तो he was, and you know, I made friends with him. That particular day, I made a bond with that man, and now he invites us over. Okay, we've done a shoot there, and he calls us himself कि आप आएँ, आप हमारी छत पे करें और आपको और नाश्ता कराते हैं, हमें चाय बना के देते हैं हर दफ़ा. It's all about accepting your audience first, and then I feel they will accept you better. What social or cultural narratives do you aim to explore through your performances? So I don't base my performances on issues and problems, and you know, I don't believe in sending out a message through what I'm presenting. My job is to make a spectacle for my audience, and I do that pretty well because I understand that people उनको हर चीज़ में ख़राबी नज़र आ जाती है, but once they look at a spectacle that is beautiful, they're going to say, they're only going to focus on the spectacle. So I believe in doing that. I just believe in making beauty for these people, and whatever they want to interpret out of it, I know for sure that it's not going to be a negative thing because they're looking at beauty. So वो naturally होते हैं ना, क्योंकि एक तो मुझे ये भी बड़ा होता था कि हमारा जो म्यूज़िक है, मैंने बड़ी परफॉर्मेंसेस अपनी ज़िंदगी में देखी हैं. मैं हर थिएटर में घुसी हूँ लाहौर के, और मैंने एक एक जगह जाके देखी है. एंड बाय थिएटर्स आई मीन मूवी थिएटर्स ऑल्सो ऑन द मॉल रोड. आई हैव सीन everything that happens in this city, and I've realized that our people connect to our music, to South Asian music. They do not want to, they don't enjoy things that आप कभी किसी जगह पे बैठे हो, किसी महफिल में बैठे हो और आप देखेंगे कि आपने अंग्रेज़ी म्यूज़िक लगाया होगा, तो सारे बैठ के जैसे ही आप एक पंजाबी गाना लगाएं, हर किसी का हाथ खड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ. And I realized the power of music through this you know, interpretation, and I realized that this is what I need to play with, because just presenting a beautiful choreography with a piece that says something is going to touch their hearts, and they should go back with an emotion, not a message. My job is to, you know, inculcate, and मेरी जॉब है कि वो इमोशंस बाहर आए उनके अंदर से. वो ये ना सोचे कि ओ आज मैंने इस पर्टिकुलर सोशल इशू पे घर जाके सोचना है, क्योंकि उसकी बहुत थोड़ी लाइफ स्पैन होता है. दे विल थिंक अबाउट इट वन नाइट, बट दिस दे विल कीप इन देयर हार्ट्स, एंड आवर पीपल नीड इट. आवर पीपल नीड टू बी कनेक्टेड टू देयर इमोशंस. So when was the first time you actually felt recognized for your work? And also, when was the biggest time you felt recognized for your work? I feel, so I mean, I'm not going to lie, I've always felt pretty celebrated because I was in school. I was मेरी टीचर्स ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे तुम्हें सर पे चढ़ाती है ना, मैं ऐसे मेरी टीचर्स ने मेरे सर पे चढ़ाया हुआ था. मैं हल्का सा हिलती थी, वो सारे सर्कल बना के अराउंड मी, लाइक वाओ ब्यूटीफुल, व्हाट अमेजिंग हेयर यू फ्लिप्ड. एंड so I've been spoiled that way, and I always knew कि अच्छा मैं स्टेज पे कुछ करूँगी ना तो ये सारे शाबाश देंगे. तब से मुझे ना एक चस्का आदत पड़ गई है उसकी, तालियों की. So I mean, I've always felt that you know,
this is something that brings me the kind of joy and appreciation that I want in my life. And so I mean I've always felt कि चलो अच्छा जो भी करती हूँ वो सारे बुरा नहीं बनाते कोई उस बात का. But the most recent one would be so we did I'm going to say this thing. मैंने बड़ा recently outside of any other company I've started my own thing and we started doing our own productions. I started producing my own shows. I started putting them up and so I've always जब से मैं छोटी थी तो मैं जहाँ जहाँ जाती थी मैं कहती थी कि अरे ऑडिटोरियम्स का मज़ा नहीं आया मुझे कभी कि ऑडिटोरियम में वो वाइब भी नहीं आती है कि परफॉर्मेंस की. आई थिंक and sets have not been my favorite thing. So I decided कि जब भी करूँगी कुछ भी तो कभी indoors नहीं होना चाहिए. It should always be public. It should always be outdoors. So we put up our first independent show, Surkh Salam, at a haveli, and it was a little house. इतना बड़ा भी नहीं था. आराम से कोई 200-300 लोग उसमें पूरे आते थे per day. And I was like, it was so beautiful. I went there for a shoot and I was like, I'm going to do a show here. And जब मैं ये कह रही थी तो मुझे नहीं लगा था कि हम कर सकेंगे because and it was August when we decided this and it was raining like mad every day. And so we rehearsed for 30 days. I was also writing my thesis then. And for 30 days, we went mad. We kept rehearsing. And then when we put it up, it was such an incredible success. Because मैंने कभी expect ही नहीं किया था अपनी audience से कि because होता है ना आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ की audience उनके लिए आती है. But जब आप अकेले करें तो आपको डर हमेशा होता है कि अरे कोई आएगा कि नहीं और हमारी टिकट बिकेगी कि नहीं, इतनी मेहनत कर दी कोई देखेगा भी कि नहीं. But what was honestly was magical. It was almost a spiritual experience for me when I saw every day. It was jam packed, guys. I'm not messing with you. हमें खिड़कियों में आखिरी दिन हमें गुंबदों के ऊपर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे. क्योंकि हमें नहीं रियलाइज हुआ था कि जो हमें 250 लोगों की जगह लगी थी ना वो असल में 350 की हमें लगी थी लेकिन थी वो 250 लोगों की जगह. तो हमारे इतने लोग आ गए थे कि हमें उस घर की खिड़कियाँ खोल के अंदर से लोग हमारी परफॉर्मेंस देख रहे थे. ऊपर छत पे लोग चढ़ गए, गुंबदों पे लोग बैठे हुए थे. एंड आवर ऑडियंस स्टेड. On the first day of the show, I remember it started raining cats and dogs. And I'm not saying कि हल्की बारिश हो रही थी, दीवानों जैसी बारिश हो रही थी. And every single person in the audience sat and watched through the performance. And that particular day, I was like कि हम कुछ कर रहे हैं जो कि इनको पसंद है. And I was like यही करना है बस और तो कुछ नहीं. So Surkh Salam was that. And then Ahle Dil, obviously Ahle Dil will always have my heart. एले दिल तो हमने एक्चुअली सेलिब्रेट भी किया था ना. अमजद के कमरे में जाके हम सारे बैठ गए थे और बस हम रात के 4-5 बजे तक बस अमजद के कमरे में. मेरे अब्बा बड़े तंग होते हैं, आपको मैं क्या बताऊं. इस्लामाबाद also we did. And then I mean who could have हम सबके ना असल में बहुत मसले हैं, घरों से इजाज़तें नहीं मिलती मुझे including me. तो बड़ी हमें मुश्किल होती है कहीं बाहर जा. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम किसी और शहर में जाके भी करेंगे और वहाँ हमारी टिकट बिकेगी. मुझे था कोई 100 बंदा बैठा होगा बड़ा सैड सा, अपने दोस्त यार बुलाने पड़ेंगे हॉल फिल करने के लिए. But we sold about 1400 tickets in Islamabad. And that also, it surprises me every time. I can never say, okay, this one was my favorite. सही बात है. Yeah. What was the inspiration and thought behind Baeyyat? Oh my God. Your favorite question. This is a very funny incident for everyone to know. So when so Baeyyat was, एक मैंने show किया था. There's this little lovely people at Apollo Media. They allowed me to use their space and we did a little show there. I called that Baeyyat. और मुझे इतना उस लफ्ज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मतलब क्या होता है. और एक मैं अपने शो में भी डाला था अभी ये बड़ा रिसेंटली कि आई एक्चुअली वेंट टू अ दरबार एंड दिस हाउ दोज मुझे मलंग होते हैं बिल्कुल जो बैठे होते हैं अपनी वो चीज़ें लेके पूरे उन्होंने वो चीज़ें भी पहनी हुई थी गले में मालाएं शालाएं. तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली मेरा हाथ पकड़ लिया. अब वो मुझे लगता है सबके साथ ऐसे करते होंगे. आई एम श्योर. मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैं बहुत ही मिल रही है कोई अल्लाह की पसंदीदा इंसान हूँ. लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि बेटे तू किसी दी बैत लेती हुई है. एंड आई वाज लाइक चाचा बैत की होता है. एंड देन ही सेड कि नहीं ऐसे होता है, बुजुर्गों का साया होता है कई दफ़ा, तो मे बी इन अ पास्ट लाइफ. दैट्स व्हाट ही सेड टू मी. And I liked the word so much. I went and I researched and I named my first independent show Baeyyat. And उसके बाद हम लोग को आपसे ज़्यादा आग लगी हुई थी. हाँ, हम लोग को आग लगी हुई थी कि हम लोग ने एक
टीम बनाना है जिसका नाम हो. हम we need a name for ourselves. Yeah. जिस तरह हर डांस टीम का around the world कोई नाम होता है ना, we wanted to have a name for ourselves. Yeah, and the story is really funny because Erum and this other protege, my student Fatima, she was there at my place. हम लोग कुछ खाना खा रहे थे, मेरे हाथ गंदे हो गए. मैं 2 मिनट के लिए गई हूँ अपने हाथ धोने, वापस आई हूँ. They're like, oh ये देखिए अमजद, हमने हमारी कंपनी का पेज बनाया. मेरे पास वीडियो है. I was like, बेटे नाम क्या रखा है? They're like, नहीं बैत ही रखेंगे, वही perfect है हमारे लिए. That's how it started, and Baeyyat means allegiance. It means swearing allegiance to anything. It can be a guru, it can be a Sufi, it can be. So for us, Baeyyat is our allegiance to dance, to semi-classical, the dance form that we. And जहाँ तक मुझे पता है, हमने पाकिस्तान लोग क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल लाहौर में, लेकिन हमने बड़ी जिद करके, हमें बड़ी बीच में लोग खफा भी होते थे कि अरे ये किस किस्म का डांस है, ये तो आप लोग अपने से ही बना के कर रहे हैं. But yeah, so that's we started Baeyyat for semi-classical. What's your creative process when choreographing or teaching a new dance number? How do I tell you that? This is a very tricky question. So I'm an extremely creative person, but I'm also very, very forgetful. So I mean, I'm thankful to Alamia that I have an amazing team who takes it up. अब मैं कुछ कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ बेटे याद रख लो. और वो फिर, I mean, I trust my team like that. वो खुद ही से काफ़ी हद तक अब तो they've started, you know, picking things up themselves. But my creative process has always been, it stands on emotion, honestly. I pick an emotion in that particular time when I'm listening to that particular piece, and I know that that's exactly what I have to show. And I mean, it might sound weird, but it's very instinctive. It's not like I plan it out. I go to my studio, we all make it windows, we go to our windows, we play the song, and then instinctively we all start feeling the same emotion, because as a team I feel like we're so well connected that I don't even have to tell them much कि वो खुद ही से इतना कुछ पकड़ लेते हैं, उनको पता होता है कि इसको हमसे ये चाहिए इस वक्त. And obviously because now they're senior performers and they know far better than I do also. So yeah, that's what it's been like. It's pretty basic. अब तो it's come to a point कि हम जब improv भी कर रहे थे, हम सारे same steps कर रहे थे. Yeah, so guys, हम लोग, this is a very cool insight that we should share, because as a team I feel we've worked so much together, and we actually spend an insane amount of time together, just letting everybody know. They never leave my house. My dad is sick of everybody now. He's had it. But उनका ये होता है कि because हम इतना time साथ spend करते हैं, and I feel our team is also very empathetic towards everybody's needs. So we know when somebody is not able to, if we're doing a group performance, and if one person is not able to deliver the same as, you know, performers who have that physical capability for that particular performance, I've actually seen my students underdo to make sure the ensemble looks good. So I think that's very important as a team, कि इतनी आपके लिए दिल में एक दूसरे के लिए एम्पैथी हो कि आप ये करने के लिए तैयार हो. बिकॉज परफॉर्मर्स सेल्फिश हो जाते हैं स्टेज पर जाके कि नहीं मैंने बेस्ट लिखना है. फिर हमारे यहाँ कोई नहीं ऐसे करता. एंजल्स हैं हम सब तो गलतियाँ भी एक जैसी करते हैं. हाँ सही बात है. अभी हमारे इस्लामाबाद वाले शो में यही हुआ है, सब जो स्टेप गलत है ना वो सबने इकट्ठे गलती की है, कोई अलग ना रह जाए. Also because when I lead I kind of forget. So then everybody forgets. हम लोग का एक रूल है कि स्टेज पे whenever you're on stage अमजद को फॉलो नहीं करना. अमजद को फॉलो नहीं करना. I am very capable of doing whatever I want to do in the moment. अच्छा जी. Do you have a muse from the industry who inspires your work? I just said it, Madhuri. Nobody but Madhuri. क्या खूबसूरत खातून है और क्या, everything about her is perfect. Okay, guys. ये तो आंसर सारों को ही पता है. हाँ. Are there any exciting upcoming projects or collaborations that we should look forward to? Guys, we are working so much this year. We're going to give you so much to talk about, honestly. So we have one show coming up. I'm not directing it myself. I'm co-directing it. Haider Ali Shah, one of my students, is directing it. It's called Pulsarat. It happens on the 19th, 20th and 21st of April in Lahore. And then on the 27th, we're taking it to Islamabad. Right after that, we're staging Anarkali at Sheesh Mahal, inshallah. And that also we're taking to Islamabad, then to Karachi.
And also we have a lot of projects planned out. अभी तो सब बता दूंगी तो फिर पहले वाली की कोई टिकट नहीं खरीदेगा, इसलिए in its own time. Acha. In your journey, was there a point where you thought, I can't do this? How did you cope with the situation, and what helped you move forward from that point? No, never. Kya baat? I've always known I can do it. I've never been hopeless with my work. I think I actually take it as मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ की नेमत होती है कि आपको काम मिल रहा हो, और जब भी आपको मिले उसके रास्ते में जितनी मर्जी हर्डल्स आएँ, आपको उनको you should wear them like a crown, and you must never with your own mouth say, oh, I am tired or I cannot do this. I can't. I'm physically incapable of doing it, because when I'm doing that, I feel like okay, अब मैं नाशुक्री कर रही हूँ कि एक तो मुझे मौका मिला है करने का इतनी लड़ाई के बाद, बिकॉज ये नहीं है कि आसान होता है. लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते बहुत, but in those particular times, if you stick to what you have to do, I was reading somewhere that the universe loves a stubborn heart, and it's honestly about how stubborn you can be about your work. I think आपको doubts हो भी तो you shouldn't believe that. Yeah, you आपको बस must बोलना never. चाहिए हाँ. और पता है जिस काम को करने में आपको मौत आ रही हो वो काम करें क्यों ना करें, घर बैठे. What advice would you give to young girls in Pakistan who are interested in pursuing classical dance? Guys, I can't. I just feel like I'm not the best person to give anybody advice about these things, because everybody's journey is different. And again, I will repeat it. If you are stubborn about it, if you push yourself enough and if you push your boundaries enough, you can make it happen. All I would want people to think is कि आप सिर्फ ये सोचना बंद कर दें कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब कर सकते हैं. जिसने करना होता है ना, वो दुनिया इधर की उधर कर देता है करने के लिए. So if you have that drive, then nobody can stop you, and you don't need my advice to really go forward with that. I will need your advice. What is one big thing you would like to achieve in your career? I think I've never really thought about it this way. I've never been the person to want more. I've always been happy with what I have. I'm happy with what I'm doing as long as my limbs are working, as long as I have a beautiful team, I have a studio to rehearse in. I'm happy with this. I've actually been very. जब नहीं भी था मैं तब भी खुश थी कि चलो मैं अपने कमरे में तो earphones लगा के नाच सकती हूँ, और अब जब है तो ये भी मेरे लिए काफ़ी है. And I feel ambition is great. I appreciate ambition in people, especially young kids. I really enjoy listening to them. But I feel acceptance of what you're going to get is also the greatest. Once you get to that point, whatever you get is going to be the greatest joy of your life. So I think I've come to that point. कुछ अल्लाह मियाँ देंगे तो मैं शुक्र से सर झुका के I will take it. But if he doesn't, मैं अभी भी सर झुका के I am very happy with what he's given me. नहीं, हम लोग का एक तो big achievement है जो हम सारे चाहते हैं वो. Yeah, worldwide. I want to take it out of the country. Yeah, that would be great. That would be great. हाँ बस पता है I even have a अरे ये तो हो जाएगा. Once you, I feel like once you put it out in the universe, okay, hello, Alamia, I have a wish. Can you make this happen for me? He makes it happen. ऐसे कभी नहीं होगा कि आपकी कोई दुआ वो ना सुने. थोड़े टाइम में सुन लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं कि बेटे अभी आप रेडी नहीं हैं, पासपोर्ट नहीं है आपके पास, कैसे भेजूं, कैसे लगेगा. But yeah, I would love that. I'd love to, and honestly not, and I feel Pakistan needs to be, recognized for its art. Our artists are not as well, because हम अब Instagram आया ना, अब TikTok, Facebook, all of these places, all these social media platforms have come. इससे पहले तो नहीं होता था. बेचारे कर करके लोग अपनी पूरी उम्र गुजार देते थे. हमारे यहाँ कितने म्यूजिशियंस हैं जिनका पता ही नहीं है लोगों को, और उन्होंने सबको सिखाया है अभी इस ज़माने के म्यूजिशियंस को. And I feel, yes, taking it somewhere else in another country, I would, but solely for the with the intention that I want to share our art with these people who don't know us and who think differently about us. Chaji, what's the most unexpected place you've ever danced? Oh my God, guys! Everywhere. I have danced everywhere, and I feel as long as आपके पास ज़मीन है और अल्लाह मियाँ ने आपको ज़मीन दी है, तो that's your stage.
I've danced in अंदरून every single गली of delegate की तो मैं brand ambassador हूँ because उधर तो मुझे लगता है मैं ही जाती हूँ बस ये सब कारनामे अंजाम देने. लोगों के घरों की छत एक दफ़ा तो मैंने अल्लाह माफ़ करे हद ही क्रॉस कर दी थी बिकॉज हमें एक छत चाहिए थी एक शूट करने के लिए. तो अब पुराने थोड़े साल के पहले की बात है, छत मिल नहीं रही थी तो एक अंकल ने हमें अपनी छत दे दी. उन्होंने कहा आप ऐसे बस 5,000 दे दें हम आपको अलाउ कर देंगे. वो छत थी बड़ी अगली, लेकिन जो उनके साथ वाली छत थी वो ऐसी इस कदर कमाल एस्थेटिक छत. तो हमने फिर क्या किया, उनकी छत पे एक सीढ़ी पड़ी थी तो एक छत से अंदरून में ना बहुत कम फासला होता है लेकिन फासला होता है कि उसमें अगर बंदा गिर जाए तो क्या ही मज़ा आए फिर. तो हमने फिर वो लैडर ली, हमने उस लैडर को ऐसे हॉरिजॉन्टली दूसरी छत पे फेंका और मैं और मेरा वीडियोग्राफर ऑल फोर्स पे इक्विपमेंट के साथ दूसरी छत पे गए. हमने पूरी वीडियो शूट की और फिर ये कौन सी अब फिर वापस आने की वो आई ही नहीं ना कभी. फिर वापस आने की हिम्मत नहीं थी तो मेहनत करके वीडियो बनाई सुनो तो पोस्ट सही. नहीं किया आपने. अब फिर वापस आने की हिम्मत नहीं थी तो जो जिस घर में घुसे थे ना उसी घर का दरवाज़ा खटका के हमने बोला हम गलती से आ गए हमें नीचे आने दें. अमजद कह रही ये पागल दुल्हन के कपड़ों में लड़की छत पे खड़ी है पता नहीं क्या करती उनको रही लग रहा यहाँ है चुराए ले भाई उनके घर के ऊपर. उनको लग रहा होगा ये भाग के आए हैं कहीं से. ये छतें क्रॉस करके कहीं जाना चाहते हैं दोनों. What singers or musicians instantly get you moving? I'm an avid Bollywood follower. I think maybe growing up, Bollywood was my staple, and I feel A.R. Rahman's music has been the most soul-touching, soul-crushing, spiritual experiences for me. I really like his music. I really like, and I love a soft, sweet, feminine voice. I love Shreya Ghoshal. I love these little, and I love Sufi music. So मुझे ये है कि जो इम्पैक्ट मेरे पे कवाली करती है ना वो दुनिया का कोई और म्यूजिक नहीं कर सकता. कवाली की फील ही अलग होती है. फरीद अयाज ब्रदर्स आर माय, हम पिछले ज़माने में कई बेस्ट फ्रेंड्स होते होंगे पता है मुझे लगता है. कैलाश खेर भी. कैलाश खेर, यस एब्सोल्युटली. कैलाश खेर इफ यू आर वाचिंग. उसके तो गाने ही नहीं छोड़े हमने, उसके सारे गानों पे हम डांस कर चुके हैं. नहीं भी है थोड़ी सी जरूरत. कैलाश खेर का पता है द बेस्ट, आई थिंक हिज बेस्ट म्यूजिक इज म्यूजिक दैट नोबडीज एवर हर्ड. लाइक पिया घरावे किसी ने नहीं सुना था. एंड आई हैव अ कपल ऑफ हिज अदर पीसेस जो कि इतने हसीन हैं लेकिन उन पे क्या 500 व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, किसी ने देखा ही नहीं हुआ वो. पर हम यूज़ करेंगे सारे. एक हम शो पूरा कैलाश खेर को डेडिकेट करेंगे. पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वैसे आजकल हम लोग का फेवरेट ज़ैन ज़ुहेब है. ज़ैन ज़ुहेब, we love them. ज़ैन ज़ुहेब सही, वो मेरे भाई हैं बिछड़े हुए. I also did their music video also and they're such nice people. They're such sweet people, such humble artists to perform with. उनकी आवाज़ें. जी, what's the key memory you have of dancing with your students? Something that almost felt surreal. I think Ehle Dil Lahore. I remember the first piece that we did. We did it at Asif Jah Haveli, and it's honestly, every place has its own energy, and I feel कि उस जगह की energy भी ऐसी थी कि, और ये ऐसी जगह है जी कि मैं अपने कॉलेज के ज़माने में कितना ही देर होगी ऐसे कॉलेज के ज़माने में ऐसे बोलती हूँ जैसे. खैर मैं अपने कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा अपने एक ट्रिप पे गई थी. वी हैड टू sit there and draw some things, and I remember then कि मैंने तब सोचा था कि यहाँ पे क्या डांस हो सकता है यार, क्या कमाल हो सकता है यहाँ पे. एंड फुल सर्कल हुआ जब मैं वापस गई हूँ वहाँ पे. एंड वी एक्चुअली परफॉर्म्ड ऑन दैट स्टेज वेयर आई वाज सिटिंग एंड मेकिंग ड्राइंग्स फॉर एन असाइनमेंट. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट पीस दैट वी डिड, मन कुंतु मौला, just that one walk where there's this piece in the we come in a circle and there's a walk where I break the circle and I come forward and and all of my students are right behind me, and it was so surreal, it was so spiritual that I felt like like I have their back, they have my back also. It was so empowering, so powerful. But yes, that's one incident. एक और की मेमोरी भी है. क्या? जैसे इस्लाम में बारिश हुई थी और हम लोग एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे बारिश हुई थी when we needed it. हमने एडिट करके बारिश वगैरह डाली हुई थी अपने साउंड्स में, उसकी जरूरत नहीं पड़ी. ये भी ऑनेस्टली ये तो मुझे लगा था मिरेकल था बिल्कुल. वो तो बिकॉज हमारा पूरा शो बारिश के बारे में था.
कि you know जब कुछ अच्छा होता है उस गांव में बारिश होने लग जाती है और हमारी हर साउंड जो हमने डिज़ाइन की थी वो उसके पीछे कहीं ना कहीं बारिश थी और आवाज़. एंड there was this particular piece in the song that was the only time I came on stage, and I was dancing with Qasim and Timmy, and and the minute we got on, it was such a climatic point in the show, and it started raining like mad, and the air, I swear, every single thing, thunder, there's lightning in that piece. उसमें ये है कि हर वीडियो के अंदर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, जहाँ पे every nature was synced with us in that piece. रानी सा के पीछे रानी जो उफ दीवानों वाला. उस दिन हम दोनों देख के एक दूसरे को रोने भी लग गए थे स्टेज हम हर दफा रोने लग जाते. हम दोनों का एक रूल है, हम आई कांटेक्ट नहीं करते स्टेज पे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को So before our last show, she came to me, she's like, Amjed, मैं आई कांटेक्ट नहीं करी आपसे. शाम को करूँगी एक ही दफ़ा स्टेज पे उससे, बिकॉज आई डू फील दैट वे. आई फील कि अगर वैसे भी मैं तू झूम अगर मैं कर रही होती कासिम के साथ या कहीं के साथ, मुझे होता है थोड़ा, लेकिन तुम्हारे साथ ज़रा ज़्यादा होता है मुझे. शक्ल देख दोनों रोने लग जाते हैं ना, एक भी नहीं रुकता. सही बात है. If you could dance with any historical figure, who would it be and why? This is अनारकली. वो तो मुझे फिर तो मुझे कोई देखता ही ना. मैंने नहीं करना. बैकग्राउंड डांसर बनता तो है, एक दफा तो होना चाहिए. होना चाहिए. अनारकली के पीछे मंजूर होना चाहिए. हो सकता है. हाँ कर लूँगी, खैर है, इसमें क्या ही होता है. But I mean with a historical figure, I can't. I mean I would love to dance with Madhubala or you know some of these old actors. 3 funniest memories with your students अभी तक. Funniest memories with my students. Every day is a funny memory, guys. I can't even tell you. घर जाती हूँ हंस के पागल हो जाती हूँ. घर पे भी हम ही साथ होते हैं. घर पे भी मेरे साथ ही होते हैं. So it's not like I'm ever left alone to make a memory out of it. But yeah, so अभी हम एक ट्रिप पे गए थे इस्लामाबाद, वो भी बहुत फनी था. इन्होंने कहीं पे वो वीडियो देख ली memory वाली. They were calling me memory on stage, guys. No. It was not even funny, I swear. And like people are like, हम आपके साथ पिक्चर खींचने, like memory come back. इधर आए हमारे साथ पिक्चर खींचे. बहुत फनी था वो. और भी बड़ी हम लोगों ने चीज़ें की हैं बीच में. We have had some hilarious. जैसे जब मैं रोती हूँ, ये तो मैंने सबको बताना है कि जब मैं रोती हूँ इनको बहुत फ़नी लगता है और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रोती हूँ. तो जैसे कोई टिकट्स बिक गई हमारी ज़्यादा तो रोना आ जाता है, कुछ अच्छा हो गया तो रोना आ जाता है. बुरी बातों पे कम आता है लेकिन अच्छी बातों पे ज़्यादा. तो एक मुझे याद है, मैं हमारी अहले दिल की टिकट सारी बिक गई 4 दिन पहले शो के. तो मैं ज़मीन पे मुझे बड़ा ज़्यादा रोना आया और मैं फुल इमोशनल बैठी हुई हूँ. एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फातिमा कयूम, शी इज़ लाइक अमजद रो रही है. पूरा स्टूडियो हंस रहा था अमजद के ऊपर. या सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू अमजद आने के लिए. मेमड़ा हैंडशेक कर लो यार. No, thank you for having me. Thank you guys for having me. It was such a fun podcast. I'm happy कि तुम थी, पता है कोई और होता मुझे और फॉर्मली बोलना.